Hi everyone, hope you're doing well. So today I'm discussing about capital gains arising from transfer of residential house. Okay, section 54 के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा. Okay, so first question is who can claim exemption. ठीक है. So under section 54 only an individual or HUF can claim exemption. ठीक है. So only individual and Hindu undivided family HUF can claim exemption. Which asset is qualified for exemption? Under section 54, exemption is available only if the capital asset which is transferred is a residential house property, that is building or land appertaining thereto, whose income is taxable under the head income from house property. Matlab, if you have any residential house property, it may be self-occupied or let out property, okay, then उस एसेट को जब आप ट्रांसफर करोगे देन सेक्शन 54 का क्वेश्चन आएगा. ओके, इट शुड बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए. द हाउस प्रॉपर्टी इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दैट इज इट must be held for a period of more than 36 months before the sale of transfer. Okay, which new assets should be purchased or acquired to avail exemption under section 54? The SEC will have to purchase or construct one residential house property. Suppose आपका पास एक हाउस प्रॉपर्टी है. आप हाउस प्रॉपर्टी सेल किया. ओके, सेल करने के बाद यू हैव टू purchase or construct one residential house property, then you will able to get exemption under section 54. The new residential house property should be purchased or constructed within the time period. Okay, within the time limit given below. For purchasing a new residential property, मतलब residential property purchase के लिए it should be purchased within 1 year before or within 2 years after the date of transfer of residential house property. ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने सेल किया उसका 1 साल पहले और 2 साल का अंदर यू हैव टू परचेज अ न्यू residential house property, then you will be able to get deduction under section 54. In case of construction, for constructing a new residential property, the construction should be completed within 3 years from the date of transfer of residential house property. The construction should be completed within 3 years from the date of transfer of residential house property. मतलब जो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने ट्रांसफर किया, सेल किया, ओके, उस डेट से विदिन 3 इयर्स के अंदर आपको न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, देन आपको सेक्शन 54 का डिडक्शन मिलेगा. A new asset should be situated in India. इंडिया का अंदर होना चाहिए, बट इंडिया का बाहर अगर होगा देन सेक्शन 54 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. सो सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या है? The amount of capital gain generated on transfer of residential house property or the amount invested in purchasing or constructing new residential property, whichever is lower. Okay, so section 54 में exemption क्या होगा? Capital gain जो generated होगा on transfer of residential house property. Suppose मेरे पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको मैंने ट्रांसफर कर लिया, सेल कर लिया. जो कैपिटल गेन जनरेटर होगा, कैपिटल गेन मींस आपका सेल लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, जो कैपिटल गेन होगा. एंड सेकंड, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू प्रॉपर्टी व्हिचएवर इज लोअर शुड बी योर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54. एक एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, for purpose of claiming exemption under section 54, investment in residential house would not only include cost of purchase of house but also cost incurred for making house habitable. There is no requirement for claiming exemption under section 54 that the SEC should file the return of income before the due date prescribed under section 139(1). चलिए अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल का थ्रू समझते हैं. ठीक है, स्कीम ऑफ डिपो, और यहाँ पर और एक डिस्कस करना है, और एक स्कीम ऑफ डिपॉजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54.
What is the scheme of deposit? Under section 54, the new residential property can be purchased or constructed within the time limit, that is 2 years. अगर purchase होगा within 2 years के अंदर you have to purchase a new residential property. अगर construct होगा then you have to construct within 3 years from the date of transfer of original asset, right? We know that. The taxpayer has to submit his return of income on or before the due date of submission of return of income. ठीक है, अब द असेसमेंट ईयर मतलब रिटर्न ऑफ इनकम एसेस मतलब आईटीआर रिटर्न फाइल करने से पहले taxpayer has to submit his return of income on or before the due date of submission of return submission on or due date submission of return of income. If the amount is not utilized for purchase or construction of the new house property till the due date of submission of return of income, then it should be deposited in capital gain deposit account scheme. अगर अपने जो ड्यू डेट है आईटीआर रिटर्न फाइलिंग का उसका पहले अगर अपने डिपोजिट आपका जो न्यू जो मेन एसेट सेल करने के बाद जो अमाउंट है आपको एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस करना है और 3 साल के अंदर एक कंस्ट्रक्ट करना है हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने नहीं किया देन यू कैन डिपोजिट द अमाउंट where कैपिटल गेन डिपोजिट अकाउंट स्कीम, मतलब बैंक में एक स्कीम होता है कैपिटल गेन डिपोजिट अकाउंट स्कीम में आपको डिपोजिट करना पड़ेगा. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट यूटिलाइज्ड इन acquiring the new property and amount deposited in the deposit account, the assessing officer will give exemption under section 54. How the deposit account should be utilized? कैसे यूटिलाइज करोगे deposit account? By withdrawing from the deposit account, new residential property can be purchased or constructed within the given period. Okay, so चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर देखिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट कोलकाता. So 38 December 22 डेट ऑफ ट्रांसफर. ओके, मतलब जो सेल किया डेट है 38 December 22 एंड डेट ऑफ परचेज कब था 38 June 2002. So more than 10 years. So ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. ठीक है, सो सेक्शन 54 एग्जाम्पशन के लिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करना पड़ेगा. ठीक है, so and next is sale consideration. Sale consideration is 30 lakhs and stamp duty value 35 lakhs. So sale consideration यहाँ पर क्या होगा, कौन सा फिगर होगा 35 lakhs which is stamp duty value. ठीक है, 110% of sale consideration से ज्यादा है इसलिए stamp duty value should be considered as sale consideration. So यहाँ पर 35 lakhs होगा. Then cost of acquisition, मतलब जब 2002 में परचेज किया था 2 lakhs था cost of acquisition. Expenses on transfer 40,000. Okay, an amount deposited in capital gain deposit scheme on July 20, 2023, 21 lakhs. To get exemption under section 54, the following residential house property is purchased at Chennai by X by withdrawing from the deposit account. So deposit account में 21 lakhs deposit किया एंड वहां से विड्रॉ करके एक मिस्टर एक्स क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया चेन्नई में. तो डेट ऑफ ट्रांसफर है 28 June 24. सो देखिए फर्स्ट जो डेट है दिसंबर 2022. ओके, फर्स्ट जो ट्रांसफर का डेट है एंड विद इन 2 years के अंदर आपको परचेज करना पड़ेगा. दैट मीन्स दिसंबर 23 दिसंबर 24 होना चाहिए, बट यहाँ पर 28 जून में ही परचेस कर लिया. ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 15 lakhs. फाइंड आउट द फॉलोइंग कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स. ओके, एक्स डज नॉट वांट टू परचेज और कंस्ट्रक्ट अनदर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द अर्लीस्ट डेट व्हेन ही कैन विथड्रॉ द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट फ्रॉम द डिपॉजिट अकाउंट. सो चलिए देखते हैं. सो यहाँ पर देखिए फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 सेल कंसिडरेशन stamp duty value as it exceeds 110% of sale consideration, the stamp duty value should be considered as sale consideration. Okay, less आपका index cost of acquisition होगा. So यहाँ पर देखिए मेरा cost of acquisition था, मेन जो asset जो मैंने सेल किया 2 lakhs cost था. So 2 lakhs divided by indexation कैसे होता है, नीचे
जो जब परचेस किया 2002 का जो इंडेक्स कॉस्ट 105 एंड 22-23 का 331। ओके, सो इंडेक्सेशन क्यों करते हैं? जो इन्फ्लेशन के लिए हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है उसके लिए इंडेक्सेशन करना पड़ता है। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 6,30,476 एंड ये ट्रांसफर करने के लिए एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर हुआ 40,000, ये भी लेस होगा। तो 35 लाख से 6,30,476 एंड 40,000 लेस होने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है 28,29,524। ठीक है, अब आपका एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्या होगा? अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम व्हिच इज 21 lakhs और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जनरेटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द डिपॉजिट स्कीम व्हिच एवर इज लोअर। सो कैपिटल गेन कौन सा अमाउंट होगा? 21 lakhs जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट किया था और यहाँ पर जो कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर। सो 21 lakhs लोअर। सो ये लेस करने के बाद मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 7,29,524। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जब ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो 21 लाख था वह विड्रॉ करने के बाद जब ये न्यू एसेट परचेज किया चेन्नई में ऑन 28 जून 2024, वहां पर आपको एक बार कंप्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो 28 जून 24 मीन्स फिनेंशियल ईयर 24-25, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 26-27। सो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपको और एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम कितना था? 21 lakhs। ओके, एंड अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय परचेजिंग ए न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्लॉट इन चेन्नई 15 lakhs। 15 lakhs जो चेन्नई में परचेज किया। ओके, सो यहाँ पर जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कितना है? अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो 6 lakhs रहेगा। Okay, in this case, X can purchase a new residential house property by withdrawing from the deposit account up to December 29, 2024, or he can complete construction of a residential property up to December 29, 2025. If he does not want to purchase or complete construction of a property, he can withdraw the unutilized amount of rupees 6 lakhs in the deposit account at any time after December 29, 2025. ओके, सो ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो है इससे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इफ ही डज नॉट वांट टू परचेज और कंस्ट्रक्ट देन ही कैन विथड्रॉ द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ 6 lakhs फ्रॉम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट जो है consequences if the new residential property is transferred within 3 years। फर्स्ट मैंने क्या बोला था ना, जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के बाद यू हैव टू परचेज विद इन 2 years और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years, देन आपको सेक्शन 54 में डिडक्शन मिलेगा। ओके, अब क्या है 3 year विद इन जो अपने न्यू प्रॉपर्टी परचेज किया, इफ द न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years, परचेज करने के बाद दोबारा अपने ट्रांसफर कर दिया विद इन 3 years, देन क्या होगा? इफ द न्यू residential property is transferred within a period of 3 years from the date of its acquisition or completion of construction, the amount of exemption given earlier would be taken back. In such a case, the capital gain on transfer of new residential property will be calculated as follows. ठीक है, मतलब सपोज मैंने मेरा जो एक हाउस प्रॉपर्टी था मैंने जो सेल किया सपोज अप्रैल 22 में। ओके, एंड विद इन 2 years के अंदर मैंने एक परचेज भी किया, सपोज मैंने परचेज किया मार्च 24 में एक प्रॉपर्टी परचेज किया और एक हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मार्च 24 से लेकर विद इन 3 years के अंदर अगर आपने ये न्यू हाउस प्रॉपर्टी को दोबारा सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, देन क्या होगा?
देन पहले जो आपको यहाँ पर कैपिटल गेन जो एग्जेम्पशन मिला था अंडर सेक्शन 54, ये आपका टेकन बैक, मतलब आपका उसको बैक करना पड़ेगा। सेल कंसिडरेशन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फर्स्ट आपको लेना पड़ेगा, देन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी माइनस एग्जेम्पशन गिवन अर्लियर अंडर सेक्शन 54। ओके, जो पहले आपको 54 में एग्जेम्पशन मिला था वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस हो जाएगा एंड बैलेंस के ऊपर आपका कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पर देखिए, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 54 एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। एक सेल से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन आगरा फॉर 18 lakhs ऑन April 23, 22। ओके, 2022 अप्रैल 23 में 23rd अप्रैल में 18 lakhs का एक प्रॉपर्टी सेल किया, which was purchased by him on April 2004 for 7,95,559। ओके, वैल्यू adopted for stamp duty 26,40,000। तो यहाँ पर सेल कंसिडरेशन होगा 26,40,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 7,95,559 डिवाइडेड बाय 113। 113 क्या है, CII फॉर 2004 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। सो डिवाइडेड बाय 113 into 331 which is cost of index of 2022-23, देन आपका आ जाएगा 23,30,354। सो ये कैपिटल सेल प्रोसीड से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करने के बाद कैपिटल गेन आ जाएगा 3,09,646। ओके, अब मैंने जून 16, 22 में ही परचेजेस अ हाउस 12 lakhs फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस ऑफ हिज डॉटर। ओके, मतलब सेक्शन 54 का डिडक्शन मिलेगा। क्या डिडक्शन, एक है कैपिटल गेन एंड सेकेंड जो अमाउंट यूज किया। ओके, मतलब 12 lakhs, व्हिच एवर इज लोअर। सो एग्जेम्पशन कितना आएगा, 3,09,646। तो कैपिटल गेन कितना होगा फॉर 22-23 फाइनेंशियल ईयर, नथिंग, नील। ओके, सो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ऑन जुलाई 18, 24 ये जो परचेज किया, देखिए न्यू 12 lakhs में जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था जून 16, 22। ऑन जुलाई 18, 24 एक सेल्स द हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, दिल्ली में जो परचेज किया था हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया फॉर 15,90,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 18 lakhs। कैन ही क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन 2। ओके, सो कैपिटल गेन इन ट्रांजैक्शन 2 क्या होगा, देखिए फर्स्ट इज सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड्स क्या है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 18 lakhs यही यहाँ पर आएगा। ओके, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, 12 lakhs लेस जो ऑलरेडी जो मैंने सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन लिया था वो टेकन बैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था ऑन जून 16, 22 विद इन 3 years के अंदर मैंने उसको दोबारा सेल कर दिया। इसलिए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो 12 लाख से मेरा कॉस्ट ऑफ जो 12 लाख से मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस हो जाएगा आपका जो मैंने एग्जेम्पशन लिया था सेक्शन 54, 3,09,646 लेस होने के बाद मतलब मेरा टैक्स ज्यादा पड़ेगा। ओके, लेस होने के बाद क्या होगा, सो 8,90,354 इसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये कब सेल किया, जुलाई 24-25। ओके, सो जुलाई 24-25 का जो इंडेक्सेशन होगा वो आपका ऊपर में होगा एंड नीचे 22-23 का इंडेक्सेशन। ओके, ये करने के बाद मेरा कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आएगा ये 9,81,810 एंड जो बैलेंस जो होगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके गाइस, सो होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर मैंने सेक्शन 54 का डिटेल डिस्कशन किया। If you have any question or queries, you can ask me through chat box.
If you want to learn income tax, you can join my income tax mastery course. Okay. For that, you have to go to my website, hamidsmartlearninghub.com, and then you have to click here. And if you want to learn from basics to advanced level, that is 5 heads of income, deductions, setup carry forward, advanced tax, TDS, how to file ITR return, tour up new e-filing portal, and many more, then you can join my income tax mastery course. After joining the course, you will get 90 plus Hindi tutorials, lifetime access, and lifetime support. Means after joining the class, you will get the access of my Telegram group where all your practical problems will be taken care of. Okay, so आपको एक ही बार enroll करना है and आपका lifetime support मिलेगा. Okay, and if you want to also learn TDS, Excel, GST, PF and ESI, ROC, advanced ROC, import export, you can join the courses as per your requirement. After joining the course, you will get lifetime access for some courses, 1 year video validity for some courses, lifetime support for some courses, 6 months support for some courses. Okay. So if you really want to become a tax consultant or tax expert, you have to invest on yourself. Okay. अगर खुद के ऊपर invest नहीं करोगे, then you cannot learn. And my mission is to help 1 lakh students find their path to success. That's why I'm giving you knowledge and support both. So अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.